Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Student, now our recent topic is halogen derivatives. And in case of halogen derivatives, in my last video lecture, we have discussed nucleophilic substitution reaction. Now, in case of nucleophilic substitution reaction, the point which we have discussed, first one, exactly what is substitution or what is nucleophilic substitution reaction. Second one, SN1 reaction, substitution nucleophilic unimolecular. SN2 reaction, substitution nucleophilic bimolecular. Now my question, before going to start today's lecture, my question, why nucleophilic substitution is called SN1, why nucleophilic substitution is called SN2. एक रिएक्शन को अपन यूनिमोलिकुलर बोलेंगे एंड सेकेंड रिएक्शन विल कॉल बायमोलिकुलर. व्हाई? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, द स्पेसिस विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन. अगर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पेसिस, that is substrate, and rate of reaction depends upon concentration of both species. If rate depends upon one species, it is unimolecular, and if rate depends upon concentration of both species, it is bimolecular, and that's why the nucleophilic substitutions are called SN1 and SN2. In detail we have discussed. Now before going to start today's lecture, let me discuss one example. Suppose I am writing here methyl chloride. Now methyl chloride is CH3Cl. Methyl chloride react with hydroxyl ion. In this case, directly you will say, sir, Cl replaced by OH. We have discussed. Okay. Now my product will be CH3 single bond OH plus Cl minor. Means here Cl is our leaving group, OH is our incoming group. Now in case of CH3Cl, here Cl is nucleophile, negative charge species. OH is negative charge species. Both are nucleophile. One nucleophile is replaced by another nucleophile. Exactly यहाँ क्या होता है? One nucleophile is replaced by another nucleophile, and with mechanism in detail अपन ने स्टडी किए थे SN1 and SN2 reaction. One nucleophile is replaced by another nucleophile, and this reaction is called as nucleophilic substitution reaction. Now my today's point, nucleophilic substitution reaction in haloarene. Nucleophilic substitution reaction in haloarene. Now haloarene or aryl halide. For example, I am writing chlorobenzene. Take bromobenzene, iodobenzene, whatever it is. Now this one is your chlorobenzene. Whether nucleophilic substitution reaction in haloarene is possible? If it is possible, it is slow or fast? That question we are going to discuss in today's lecture. Today's lecture really important point of your entrance examination as well as very short type of question. जो section A में question आते हैं, related to that, today's lecture is really important. Now I'm going to start nucleophilic substitution in haloarene. Now my first point, nucleophilic substitution reaction in haloarene is low, or it is less reactive as compared to alkyl halide. It is less reactive as compared to alkyl halide. Okay, nucleophilic substitution reaction in haloarene is less reactive. Okay, now the question arises, why nucleophilic substitution reaction in haloarene is less reactive as compared to alkyl halide? Now today is my point. There are two factors. First one,
that is resonance effect. First point is your resonance effect. And now second point, sp2 hybridized state of carbon to which halogen atom is attached. Now 2 points are there. Why nucleophilic substitution reaction is less reactive in haloarene as compared to alkyl halide? First point is resonance effect. What is resonance effect? That we will discuss. And second point, sp2 hybridized state of carbon to which halogen atom attached in haloarene. Now I have written the structure of haloarene. Take any haloarene. Suppose I am taking here chlorobenzene. Now this one is your chlorobenzene. In case of chlorobenzene, this carbon to which halogen atom is attached, now this carbon, it is sp2 hybridized. This carbon is sp2 hybridized. यहाँ क्वेश्चन बनता है, what is hybridized state of carbon to which halogen atom is attached? What is hybridized state of carbon to which halogen atom is attached in haloarene? Now in haloarene it is sp2, but in case of alkyl halide it is sp3. In haloarene it is sp2. In alkyl halide जो कार्बन को हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp3. So now first point I am going to start resonance effect. Actually student, what is the meaning of resonance? किसको बोलूंगा मैं resonance? Resonance means we can say delocalization. Resonance किसको मैं बोलूंगा? What is the resonance? Delocalization. Now delocalization actually ये word का meaning होता shifting. Delocalization इसका meaning क्या होता? Shifting. किसका shifting करेंगे अपन? किसका delocalization करेंगे? Delocalization of pi bond electron. Delocalization of pi bond electron or non-bonding electrons, and non-bonding electrons are called as lone pair of electrons. Non-bonding electrons are called as lone pair of electrons. So what is the resonance? Delocalization or shifting of pi bond electron or lone pair non-bonding electron, that is called as resonance. Now how delocalization, how the shifting takes place? Now what is pi bond electron? Pi bond means double bond or triple bond. sp3, sp2, sp hybridization in 11th standard हमने डिस्कस किया है. ओके, पाई बॉन्ड का मतलब क्या रहता है? आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जब एक डबल बॉन्ड बनता है, नाउ इन वन डबल बॉन्ड, one is pi bond and another one is your sigma bond. End to end overlapping sigma bond and side by side overlapping pi bond. What is sigma bond? A bond which is formed by end to end overlapping. And what is pi bond? The bond which is formed by side overlapping, lateral, coaxial. Now in case of nature of chemical bond, 11th standard अपन ने discuss किया है. तो just remember, if double bond is present, there is one pi bond and one sigma bond. If triple bond is present, so there are two pi bond and one sigma bond. अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसमें एक क्या रहता? सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या रहेगा? पाई बॉन्ड. इफ ट्रिपल बॉन्ड लाइक अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, so there are two pi bond and one sigma bond. Now likewise in case of benzene, how many pi bonds are present? अब बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड रहेंगे? जितने डबल बॉन्ड. नाउ 1, 2 and 3. So how many pi bonds are present in case of benzene? 3 pi bonds are present, and the electrons which are involved in formation of pi bond, that is pi electrons. Now this one is pi electrons. Pi bond, one bond means 2 electrons. So in case of benzene, how many pi electrons are there? 6. Okay, now this is my point. Okay, start. Why nucleophilic substitution reaction, yeah, why haloarene less reactive towards nucleophilic substitution reactions? Our first point is resonance. Now in case of haloarene, the halogen atom has lone pair of electrons. In haloarene, halogen atom has a lone pair of electron. Now these are the lone pair, non-bonding electrons which are not involved in bond formation.
जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते वो इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ इन हेलोएरिन, halogen carries lone pair of electrons which are in conjugation, देखो conjugation का मीनिंग क्या था पता है. नाउ सपोज C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C. नाउ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. अगर अल्टरनेट कोई चीज रहा तो उसको अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं. ओके, नाउ उनमें क्या था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. नाउ हियर these are the lone pair of electron. Single bond, double bond means lone pair of electrons are in conjugation with double bond. Single lone pair of electrons are in conjugation. Lone pair, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. So lone pair of electrons are in conjugation with double bond, or we can say pi bond electrons of benzene aromatic ring. Now our point, resonance effect, that we are going to start. The lone pair, one of the lone pair on halogen atom in haloarene in conjugation with double bond pi bond of aromatic ring. अब ये conjugation, इसका इफेक्ट क्या होता है, halogen will donate its lone pair of electron. हेलोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिटवीन sp2 कार्बन एंड हेलोजन एटम. कहां डोनेट करेगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन sp2 कार्बन एंड हेलोजन. अब स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, 11 में अपने डिस्कस किया है. नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब रहता है 1 बॉन्ड. 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या रहता है, 1 बॉन्ड. एंड 1 बॉन्ड मींस 1 नेगेटिव चार्ज. हेलोजन डोनेटिंग 1 लोन पेयर, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो ये जो कार्बन sp2 कार्बन एंड हेलोजन, ये जो सिंगल बॉन्ड रहेगा ये कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में. 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा मींस वहां एक बॉन्ड बनेगा एंड साइमल्टेनियसली दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर. अब जैसे ही ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पर डोनेट करता. नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता मींस एग्जैक्टली क्या होता, सी हियर, दिस वन इज योर बेंजीन रिंग, दिस वन इज योर बेंजीन रिंग. नाउ दिस डबल बॉन्ड रिमेन एज इट इज, वो अभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए. नाउ हियर कार्बन एंड हेलोजन सिंगल बॉन्ड, 2 electron donates here, single bond will convert into double bond. After donation of electron, any species carries a positive charge. Now अब इसका bond electrons यहाँ shift हो रहे, मतलब ये double bond convert होगा सिंगल बॉन्ड में. एंड 1 बॉन्ड शिफ्ट हो रहा मींस 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे या 1 नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा. ये जो 2 कार्बन के बीच में जो 2 बॉन्ड रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन कहां, पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस कैरीज नेगेटिव चार्ज. थ्योरी याद रखो, 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 नेगेटिव चार्ज. तीनों का मीनिंग सेम रहता है. 1 नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 बॉन्ड. दैट्स व्हाई दिस कार्बन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. Now after that this negative charge means 2 electron shift here. अब ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो रहा, मतलब ये जो 2 कार्बन है इसमें एक बॉन्ड बनेगा. बिकॉज अभी अपने देखे 1 नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 बॉन्ड. सो ये सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, मतलब दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हेयर. सो सी माय नेक्स्ट स्ट्रक्चर. Okay, now this species remain as it is, no effect on this double bond. Okay, now this negative charge shift electron here, so this single bond convert into double bond. ये pi bond अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा, मतलब एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड, एंड दिस स्पेसीज कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. मीन्स अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज अपने शिफ्ट किए. अब ये नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट मतलब कहां शिफ्ट होगा, इधर. ओके, सो सी माय नेक्स्ट स्ट्रक्चर.
नाउ दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हेयर, ओके, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. नाउ दिस वन इज योर halogen atom carries lone pair of electron plus positive charge. Now my last structure, in case of last structure, ये negative charge इधर shift हो जाएगा. Means this single bond convert into double bond और ये bond electron वापस halogen के पास चले जाएंगे. So this double bond convert into single bond. See my final structure. Okay, this single bond convert into double bond, this double bond convert into single bond, this lone pair of electron as it is, और ये negative charge यहाँ shift होगा, means 2 electron shift होंगे. Now this is called as resonating structure. इसको अपन क्या बोलते हैं? resonating structure. And this resonating structure, इसके लिए arrow use करते हैं pointing both direction. कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं? एरो पॉइंटिंग इन बोथ डायरेक्शन. ओके, नाउ सी दिस वन इज योर क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज आल्सो योर क्लोरोबेंजीन. बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्लोरोबेंजीन? दोनों भी क्लोरोबेंजीन है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ओनली पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड. सी हियर डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड. हियर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन, double bond. Here double bond present between 2 carbon, here single bond. We have shift the pi bond, delocalize the pi bond. pi bond shift किए मतलब अपने उसको क्या किए? delocalize किए, एक लोकेशन से, एक पोजीशन से दूसरी जगह लेके गए उसने. लेकिन कहीं भी उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ? नो. कहीं भी उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर कहीं भी चेंज हुआ? नो. नाउ दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट. नाउ स्टूडेंट, ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. व्हाट वाज आवर पॉइंट? अपने लेक्चर का पॉइंट क्या था? क्या हेलोएरिन डिफिकल्ट या लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो रहता, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्किल हलाइड. उसका मेन रीजन अब स्टार्ट होता. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोज कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन. देखो इधर ये जो कार्बन है और ये हेलोजन है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है? क्या इन हेलोएरिन कार्बन हेलोजन शोज डबल बॉन्ड कैरेक्टर. इधर है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर. डबल बॉन्ड कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस या यूज क्या रहता है? दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर लेंथ. डबल बॉन्ड आया तो वो क्या हो जाता है? बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर लेंथ. उसका लेंथ कम हो जाता है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन मॉलिक्यूल. नाउ इन केस ऑफ हेलो अल्केन, सपोज CH3X, दिस बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, डिस्टेंस बिटवीन 2 atom. Now this bond length, it is near about 178 picometer. और हेलोएरिन में ये जो बॉन्ड लेंथ रहता, now this bond length become 169 picometer. ये जो बॉन्ड लेंथ रहता कार्बन और हेलोजन का हेलोएरिन में, वो कितना रहता? 169 पिकोमीटर. उसका यूनिट है पिकोमीटर. और ये बॉन्ड लेंथ इसमें कितना था? 178. अब देखो जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड क्या हो जाता है तुम्हारा? वीक, इजीली ब्रेक होता. और जितना बॉन्ड लेंथ कम रहेगा मतलब बॉन्ड शॉर्टर होता और उतनी ज्यादा एनर्जी लगती ब्रेक होने के लिए. तो मैं इसका रिजल्ट क्या लिखूंगा? व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस रिएक्टिव. हेलोएरिन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्किल हलाइड. तो हियर द कार्बन हेलोजन बॉन्ड शोज डबल बॉन्ड कैरेक्टर. उसका मेन पॉइंट क्या रहेगा? नाउ दिस बॉन्ड बिकम शॉर्टर, ओके, स्ट्रॉन्गर as compared to haloalkane. The bond becomes shorter, means it's required more energy to break, means this bond not easily break, and that's why nucleophilic substitution reaction
या हेलोएरिन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्किल हलाइट। होप स्टूडेंट ये जो 15-20 मिनट्स का जो डिस्कशन था आपको समझ में आया होगा। अपना एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता था, अपना पॉइंट क्या था। हेलोएरिन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आपने SN1 और SN2 देखे, ये इजीली रिप्लेस नहीं होता OH से। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता, बॉन्ड शॉर्ट हो जाता। देखो 169 और 178 बॉन्ड शॉर्ट रहा, मतलब इजीली ब्रेक होता क्या? नहीं। अब अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो रहा तो वहां सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट पॉसिबल है? नो। यहां क्वेश्चन बनता है व्हाई हेलोएरिन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्किल हलाइड। तो उसका रीजन रहता है रेजोनेंस इफेक्ट एंड sp2 हाइब्रिडाइज state of carbon to which halogen atom is attached in haloarene, and bond length shorter is the bond length, difficulty is to break the bond. Okay, but still nucleophilic substitution reactions are possible in haloarene. अपन ने एकदम से उसको खत्म नहीं किए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही नहीं, ऐसा अपन ने नहीं बोले। अपन ने क्या बोले? लेस रिएक्टिव। नाउ लेस रिएक्टिव इट मींस उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, बट अंडर विच कंडीशन? कौन से कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा हेलोएरिन में? दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने यहां लिखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। इन एग्जाम इट मे आस्क write the resonating structure of bromobenzene. Instead of Cl, write Br. Resonating structure of iodobenzene. Cl की जगह मैं क्या लिखूंगा? I. Okay, तो student note down this resonating structure. Our next point, under which condition nucleophilic substitution reaction is possible in haloarine? Note down this point. So our point, under which condition nucleophilic substitution reaction is possible? Under which condition nucleophilic substitution reaction is possible? अब कब होगा? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अपने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किए थे L1 में, माइनस आई इफेक्ट and plus I effect. Inductive effect it is represented by symbol I. Minus I effect मतलब electron withdrawing effect, and plus I effect मतलब electron donating effect. Now which group shows minus I effect? So the group like NO2, CN, COOH. Okay, this group, so many examples are there. This group shows minus I effect, electron withdrawing group. So the presence of electron withdrawing group at ortho and para position. Now see, this one is your chlorobenzene. So this position is called as ortho position. Now NO2, it is electron negative inductive effect. Second example, I am taking halogen, haloarene. Okay, now here electron withdrawing groups are present, two position. Third one, I am taking haloarene in which electron withdrawing group which shows minus I effect present ortho, para and ortho position. अगर ऑर्थो पोजीशन पर या ऑर्थो पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहा तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल. सपोज आई एम राइटिंग हियर NaOH reaction carried out at about 423 Kelvin. NaOH reaction carried out at about 423 Kelvin in acidic medium. Okay, अब ये केस में क्या होगा? Now this Cl and Na
क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl, एंड दिस OH अटैच टू दिस कार्बन, मतलब Cl इट इज रिप्लेस्ड बाय OH, one nucleophile it is replaced by another nucleophile, one nucleophile it is replaced by another nucleophile. Now it is called as nucleophilic substitution reaction. Now here suppose I am giving you warm water, मतलब steam, warm water means steam. Now in this case जब आप लोग रिएक्शन देखेंगे 1H from water and Cl, क्या रिमूव हो जाएगा, HCl. Now this one is your water, HOH, H2O. Now this H and Cl, HCl रिमूव हुआ तो बचा क्या मेरे पास में, OH, means my product will be, see this one is your benzene ring attached here, OH, NO2, then NO2, then NO2. Now here Cl it is replaced by OH, one nucleophile it is replaced by another nucleophile. Suppose reaction carried out 403 Kelvin, AQ का मतलब रहता है aqueous, aqua means water, aqueous sodium carbonate is given to you, Na2CO3. अब इसमें क्या होता है कि जो वाटर रहता है, वाटर का H एंड Cl क्या रिमूव होता है, HCl, remaining OH attached to this carbon. Now here nucleophilic substitution reaction is possible. So your question may arise, under which condition nucleophilic substitution reaction is possible. तो कब nucleophilic substitution reaction haloarene में possible है, the presence of -I electron withdrawing group at ortho position. ऐसे केस में हेलोजन हेलोएरीन का सब्स्टिट्यूट होगा by another nucleophile. And student, this is all about nucleophilic substitution reaction in haloarene, and hope you have understand this concept. So in brief पूरे लेक्चर का एक 30 सेकंड में मैं रिवीजन कर देता हूं. क्या, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन न्यूक्लियोफाइल इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, बाकी कहीं भी इफेक्ट नहीं होगा. वन न्यूक्लियोफाइल इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल. अब हेलोजन डेरिवेटिव्स में दो पार्ट अपने डिस्कस किए, अल्किल हैलाइड एंड हेलोएरीन, हेलो अल्केन एंड हेलोएरीन, व्हिच इजीली अंडरगोज nucleophilic substitution reaction, haloalkane, या which has highly reactive haloalkane. इसका मतलब क्या होता है, हेलो अल्केन, इसका मतलब क्या होता है कि अल्किल हालाइड मतलब एरिल हालाइड, ओके, एरोमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, एरिल हालाइड हेलोएरीन इट इज लेस रिएक्टिव. क्यों वो लेस रिएक्टिव रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट विच शोज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन. अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है, मतलब दो एटम की जो लेंथ रहती है वो शॉर्ट होती, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है और उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है, मतलब वो इजीली इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव. तो फिर अंडर विच कंडीशन इट अंडरगोज nucleophilic substitution reaction? So presence of electron withdrawing group at ortho position. Student, CET में entrance exam में एक क्वेश्चन आता, आपको वो ये तीन स्ट्रक्चर देता, 1 2 3, ओके, और वो एक क्वेश्चन पूछता, which species highly reactive towards nucleophilic substitution. इसमें रिएक्शन फास्ट होगा, सेकेंड केस में या थर्ड केस में, इन विच केस द रिएक्टिविटी इज हाईएस्ट, लार्जर, ग्रेटर या मोर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ज्यादा रहेंगे उतना वो स्पेसिस हाईली रिएक्टिव रहता. Larger the number of electron withdrawing group present at ortho and para position, highly is the reactivity. अब मुझे बोलो तीनों में हाईली रिएक्टिव कौन रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा या थर्ड रहेगा. ना, राइट योर आंसर इन योर नोटबुक एंड ग्रुप में मुझे वो सेंड करो. विच वन इज हाईली रिएक्टिव अमंग दिस थ्री टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
reaction. So student, now this one is our second last lecture of topic halogen derivatives. In my next video lecture लास्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ haloarenes are less reactive towards nucleophilic, then it easily undergoes electrophilic substitution reaction. और वो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा what is electrophile, what is nucleophile and what is electrophilic substitution reaction. Allah Hafiz.